Hello everyone, this is Aryan Thakkar, your coach and mentor, and welcome back to my YouTube channel on Aryan Tutorials. How are you all doing? सबसे पहले तो मुझे बताइए कि क्या आप सभी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? क्या आप सभी को आवाज सुनाई दे रही है? Perfect, perfect. And are you all ready to master your ISC Rhapsody today with me? क्या आप लोग बेहतरीन तरीके से तैयार है to ace your poems today? Hi Dion, hi, hello everyone. Hi Tanu Cookie, hi Ankush, hi Nikhil, hi Rosita, hi Ishika. Hi, hello everyone, hi, good evening. Yes, Yuvraj, it is very much possible to score 95 in English. मेहनत करिए, हार्डवर्क करिए, पढ़ाई करिए, ये आखिरी 9 दिनों में आपके बेहतरीन स्कोर्स आएंगे। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपको कल का कैसा लगा? हाउ वर द MCQs and the give reason questions which I had specially curated for you people, and that too in a pattern of ISC oriented, the kind of questions which are probable. क्या आपको पसंद आया कि नहीं आया? तो अगर आपको पसंद आ रहा है देन आपको मेरा फी पे करना है। जल्दी से लाइक कर दो इस वीडियो को, फटाफट से अपने फ्रेंड्स को बुला लो, बोल दो आर्यन भैया, आर्यन सर, आप जो भी मुझे बुलाते हो वो लाइव आ चुके हैं। आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से रैप्सडी को कवर अप भी करेंगे एंड रैप अप भी करेंगे। डायरेक्टेड राइटिंग बेटा मैंने ऑलरेडी बता दिया है। स्पीच राइटिंग इज हाईली प्रोबेबल फॉर दिस ईयर्स बोर्ड एग्जामिनेशन सिंस यू ऑल आर द लास्ट बैच विद स्पीच राइटिंग। 2 साल पहले फिल्म रिव्यू आया था एंड उसके बाद उसको हटा दिया गया। I think it should be the same case with 2025 and 26 batch as well. Since आप लोग last batch है speech के साथ, it is highly probable. If not, then SOP is my second preference, and post that maybe book review. ठीक है? तो चलिए शुरू करें या 1 मिनट और रुक जाए, लोग को आने दे। Oh, thank you so much, Pro Satan from Kerala. Thank you so much. Ankush, I will come up with answer writing framing as well. Don't worry, I'll do show you the sample answers of my students as well. चिंता मत करिए, सब कुछ करा दूंगा, ठीक है? बस आराम से फॉलो करते जाइए, मेहनत से पढ़ाई करिए। Oh, thank you so much, Leenat Ahmad. चलो, let's start with today's class. गणपति बाप्पा मोरया, भगवान का नाम लेते हुए जय मां सरस्वती। लेट्स डिग इनटू रैप्सडी फॉर टुडे। बहुत ही बेहतरीन MCQs and give reasons बनाए गए हैं आप सभी के लिए। This will give you a robust and insightful practice onto the kind of questions which can be asked. अपना कॉपी निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए एंड कीप नोटिंग डाउन इंपॉर्टेंट वर्ड्स, फ्रेजेस, जो भी होगा। कोई वोकैबुलरी के लिए अगर आपको वर्ड मिल जाता है, कोई MCQ में अगर आपको कोई लाइन पसंद आ जाता है, उसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है? सो चलो, स्टार्टिंग ऑफ विथ Rhapsody. To begin with the first poem, we have telephone conversation. And the first MCQ for this live goes like, why does the speaker
refer to his admission of being African as a self-confession. He feels guilty about his racial identity. He is apologizing for his heritage. He wants to be honest to avoid a wasted journey. He is mocking the societal view that being black is a crime or a flaw. बस यही तो आपसे भूल हो जा रही है, यही तो आपसे भूल हो जा रही है. आपसे नहीं पूछा है why did he make a self confession? Why does the speaker refer to his admission like whatever he confronted as a self of being African as a self confession? Think of a time where why does he admit that I am an African beforehand, before even the landlady asking? Because in the past he might have had many such racial prejudice practices onto him, and due to that, in order to avoid a futile travel coming from far off place and then all of a sudden being rejected, he wants to avoid that. That is why he makes a self confession, where the purpose here, the underlying purpose here of the self confession is to mock the entire societal's point of view of considering black as a crime or a flaw. ठीक है? Owing to his past experiences, उसने इतना कुछ go through किया है, सोसाइटी ने उसको इतना रेशियल प्रेजुडिस के साथ ट्रीट किया है कि आगे फर्दर वो और एस्केलेट ना हो बोल के सोसाइटी एट लार्ज को वो मॉक कर रहा है दैट बीइंग ब्लैक इज नॉट अ क्राइम एंड इज नॉट अ फ्लॉ. ठीक है, दैट विल बी योर फर्स्ट वन. गोइंग टू द नेक्स्ट वन. What does the lipstick coated and gold rolled cigarette holder voice of the landlady symbolize? It is basically her false facade. I hope you all know what is the meaning of facade. Facade means pretense. ठीक है? Her sophistication was a pretense. So basically it symbolizes a mask of sophisticated good breeding that hides her underlying prejudice. Under her sophisticated facade, she tries to conceal or hide her racial prejudice. ठीक है? Third one, the repetition of the color red booth, pillar box, omnibus in the poem serves to. What is the purpose of red booth, omnibus? सोच के बोलिए. नहीं, option A is not the correct option. Highlight the speaker's sudden anger and rage. No. 1 second. समझो. Was speaker angry and frustrated at landlady's absurd question? Yes. But how? अगर मैंने आपको कुछ भी डेरोगेटरी कहा या कुछ भी बुरा बोला, all of a sudden when that thing enters into your ear, जब वो बातें आपके कान में जाएंगी, सबसे पहला प्राइमरी रिएक्शन क्या होगा? यू विल बी लाइक what? So all of a sudden the things around you will start to get more more evident to your eyes, and you will grow observant at the first beginning, at the first place. आप चीजें आपके आंख के सामने और ज्यादा उभर के आएंगी. उसके बाद that will transition into your aggression and frustration. So सबसे पहले there is a shock, like what did this person say? So that makes option C your correct option, that this red booth, red pillar box and omnibus, double-decker omnibus, is basically the ground of the poem in vivid, tangible British setting. It shows that he was in a place which by the depiction of the red booth, pillar box and omnibus से समझ में आता है कि वो एक British environment में था, and at the same time reflecting at the speaker's sensory overload, like his vision, or he had grown observant to such an extent that he could not क्या बोलूं मैं,
कि he could not believe or he could not comprehend what he had been spoken to, like क्या उसे बोल दिया गया है on the part of landlady. ठीक है, चलिए फोर्थ वन. Which of the following best describes the landlady's clinical impersonality? Clinical is cold. Very good. Gitak, Vishnoi. Very good. Very good. Very good. Which of the following describes the landlady's clinical impersonality? That she is treating the speaker's race as some specimen. Specimen means as some object rather than a human trait. She has just reduced him down or reduced him down to mere skin tone, mere skin color. So that is what your cold impersonality suggests. ठीक है? Treating him as an object, objectifying the speaker. Next one, read the two statements and choose the correct option. Statement one, the speaker describes his skin as West African sepia. Statement two, the landlady is confused because she cannot categorize the speaker into her simplistic light or dark binary. Binary is lens. ठीक है? Oh, thank you so much, treasure of stories. चलिए क्या होगा? अरे अरे, आप लोग कॉज एंड इफेक्ट वाला में बार बार गलत कर दे रहे हैं, ध्यान से समझो. स्पीकर अपने स्किन को वेस्ट अफ्रीकन सेपिया बोलता है, जिसकी वजह से लैंडलेडी समझ नहीं पाती है और कंफ्यूज हो जाती है कि हाउ डार्क और लाइट एक्चुअली हिज स्किन टोन इज. सो द रीजन, स्टेटमेंट टू का जो इफेक्ट है, यानी जो आउटकम हुआ, जो रिजल्ट हुआ, वो किसकी वजह से हुआ? It was because of the narrator's choice of words. Because he used West African sepia, बोल के the landlady, she could not understand what exactly is he trying to say. So over here, statement one is the cause and statement two is the outcome or the effect. Option A will be your correct option. ठीक है? Option A will be your correct option. चलिए आगे बढ़ते हैं. What is the speaker's intention when he mentions the peroxide blonde palms of his hand and raven black of his bottom? Speaker का intention क्या है? What does he intend to do? Intention क्या होगा? ये है आपका हिंट. राइट? उसका इंटेंशन क्या है? टू मॉक. वेरी गुड, अब आया आपको समझ में. लवली. He used absurd expressions or absurd adjectives to define his skin tone so that he could mock landlady's ignorance or her dehumanizing comments. ठीक है? That is what his intentions were. Next one. What does the phrase spectroscopic flight of fancy suggest about the landlady? जो लोग साइंस स्टूडेंट है वो लोग स्पेक्ट्रोस्कोप का प्रोसेस जानते होंगे, यानी ऑल्दो आई एम नॉट अ वेरी गुड साइंस स्टूडेंट, या मैंने साइंस बहुत पहले ही छोड़ दिया था, बट मुझे इतना पता है स्पेक्ट्रोस्कोपिक जब मैं पढ़ रहा था तब जब लाइट यहां से कोई ऑब्जेक्ट में आता है तो जो रिफ्लेक्शन होता है अलग अलग कलर्स में रेडिएट होके इधर उधर जाता है. राइट? सो मेटाफोरिकल लेवल पे वो क्या बता रहा है? मेटाफोरिकल लेवल पे वो क्या बता रहा है? दैट जब नरेटर डिफरेंट डिफरेंट एडजेक्टिव्स को यूज करता है टू डिस्क्राइब हिज स्किन टोन, लैंडलेडी इज इनकेपेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली दोज वर्ड्स मीन्स. सो हर माइंड स्टार्ट्स क्वेश्चनिंग
or starts to identify that how exactly light skinned or dark skinned would the speaker be. So it is option C, where she is mentally trying to visualize exactly how dark the speaker is. ठीक है? Next one, the clanging of the receiver. Clanging का मतलब क्या होता है कि फोन का रिसीवर ठपाक से नीचे रख देना, ठीक है, like a thunderclap. So the clanging of the receiver at the end of the poem most likely represents what? Clanging का अगर textual meaning बताओ तो rejection. She rejected. So उस हिसाब से क्या होगा? Very good, very good, very good, very good. The landlady's final rejection and the abrupt end of the polite pretense facade which she had put on. ठीक है? It marks the hypocrisy coming to its surface. Next one. Madam, I pleaded, wouldn't you rather see yourself? This final line is an example of कि अरे अरे मैडम देख के तो जाइए कैसा हूं मैं, कैसा दिखता हूं. What was speaker's intention? Amazing, amazing. Very good, guys. Very good. It was a sarcastic reply, defiance. He intended to violate her attempt or break her attempt to by challenging landlady to face the human she is judging. ठीक है? It was basically a defense mechanism. It was his armor, it was his shield. It was an act of shielding his dignity. ठीक है? He tried to shield his own dignity by sarcastically mocking the landlady. ठीक है? Next one. Which theme is most central, the core to telephone conversation? Right? The central theme is continuity of racial practices. In spite of human progressing, civilization getting advanced, still people continue to indulge themselves into racial discriminatory practices. And that is your option D, the dehumanizing nature of racial conformity. ठीक है? Being obsessed with the skin tones of others. Chalo. Give reason. The landlady in the telephone conversation asked whether the speaker was light or very dark. चलिए फटाफट से अपना आंसर्स जल्दी जल्दी बताइए. Very good, bizarre. Very good, guys. Very good. Because landlady was deeply prejudiced and wanted, I would write this in single inverted comma, and wanted to assess
speakers blackness. ठीक है. Landlady was deeply prejudiced. ठीक है. Landlady was deeply prejudiced and wanted to assess speakers blackness. चलिए, second one. The poet describes the landlady's voice as lipstick coated, long gold rolled cigarette holder because या गिव रीजन का क्वेश्चन बिकॉज से ही आता है अनुष्का. आपने एग्जाम तो दिया होगा ना अपने स्कूल में. Why poet describes landlady's voice as lipstick coated, long gold rolled cigarette holder? Because of her superficial and false good breeding, as a mask for her deep rooted racist tendencies. ठीक है. Because of a superficial and false good breeding which served as a mask for her deep rooted racist tendencies. Third one, the poet uses the metaphor spectroscopic flight of fancy to describe the landlady's pause because very good, Bizarre. I really love your answer because it vividly showed her confused state of mind as a result of narrator's answer. सर बहुत भयंकर इंग्लिश लिख रहे हैं, वेरी डिफिकल्ट. आपको भयंकर ही लिख के आना होगा अगर 90 चाहिए तो. Because she was mentally trying to break down the shade of his skin tone. ठीक है. She was mentally trying to break down the shade of his skin tone. That is why. English hard last year से ही होने लग गया बेटा. Next one. The speaker felt compelled to declare his race up front in telephone conversation because starting में ही speaker अपना race को confront कर देता है. Madam, I am African. I do not hate wasted journey. Why पे घुसो. क्यों ऐसा करता है? Very good. Why पे घुसो. To avert. What is the meaning of avert? Avert means avoid.
face to face humiliation. Besides, he hated wasted journey. ठीक है? The primary reason is he wanted to avoid being humiliated and rejected. ठीक है? He did not want to get humiliated and rejected. Therefore, he decides to make a self-declaration and a self-confrontation. Chalo, next one. The silence after the speaker's description of his skin color as West African sepia continued until the landlady's truthfulness changed because. हाँ बेटा, पोएम में भी कोट्स यूज करना है तुषार. Why was there a prolonged silence the moment poet said West African sepia until the truthfulness clanged to landlady? Because she was momentarily stunned and confused. Please use this in your answer. ठीक है? She was stunned at the same time confused by the speaker's choice of sophisticated words, and that is why the silence was prolonged. Yes, she was trying to decipher, she was trying to understand all our plausible reasons. ठीक है? सारे सही है. चले नेक्स्ट पोएम की तरफ भागे. मजा आ रहा है आपको? अच्छा लग रहा है क्वेश्चंस? आई होप यू ऑल आर गेटिंग गुड प्रैक्टिस. 105 लोग देख रहे हैं और लाइक सिर्फ 65 है. ये तो नाइंसाफी है भाई. लाइक करिए, नहीं तो हमको मोटिवेशन कैसे आएगा? माई ओनली सोर्स ऑफ मोटिवेशन इज योर अप्रिसिएशन कि हाँ भाई चलो मैं हेल्प कर पा रहा हूं लोगों को. दैट इज माई ओनली सोर्स ऑफ मोटिवेशन. तो थोड़ा कंजूसी कम दिखाइए. लाइक करो भाई, सिर्फ लाइक ही तो करना है, कर दो. चलिए, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टिथनस का एमसीक्यू. What is the primary irony presented in the opening stanza where the woods decay and fall, but Tithonus remains? What is the idea behind or irony behind the statement that all the living beings in nature, they have the benevolent gift of death, but then Tithonus abnormally remains suspended from this natural order of cycle? Very good. Amazing, guys. Amazing. Death is presented as natural to everyone, restorative grace, which Tithonus is denied of. He does not have any such privilege. He remains suspended from dying or experiencing death, which he yearns for, which he craves for. ठीक है? Next one. Tithonus describes his immortality as cruel because why to him is his immortality cruel? Very good. Because he was granted with eternal life but without eternal youth. ठीक है? And if you remember the phrase immortal age without immortal youth. इटर्नैलिटी तो गिफ्ट कर दिया गया लेकिन यूथ देना रह गया.
चलिए थर्ड वन, लाइक वेल्दी मैन हु केयर नॉट हाउ दे गिव, व्हाट डज दिस सिमिली, लाइक है तो फिगरेटिव स्पीच इज सिमिली, रिवील अबाउट Tithonus's view of the gods. When he says that Eos like wealthy men who care not, care not का मतलब क्या होता है, unbothered, एंड अनबॉदर्ड का कल ही मैंने आपको सिनोनिम बताया क्या होता है, व्हेन वी आर अनबॉदर्ड और अनकंसर्न्ड इट मींस दैट वी आर इनडिफरेंट. इकोनॉमिक्स में आपने किया है ना इनडिफरेंस कर्व, राइट, सेम सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. मैं इको भी आपको कराऊंगा और बहुत बेहतरीन तरीके से कराऊंगा, ठीक है, सो उसके लिए भी तैयार हो जाइए. So that aligns with the gods are indifferent and do not consider the long term consequences of their gift. For example, अपने भोले बाबा को ले लीजिए. अपने भोले बाबा इतने भोले हैं कि अगर कोई दानव भी उनकी तपस्या कर ले खुश होके वरदान दे देते हैं. एक मीम भी बना था, उसने कहा प्लीज, मैंने कहा नहीं, उसने कहा प्लीज, मैंने कहा नहीं, उसने कहा प्लीज, मैंने कहा नहीं, चल ले ले, दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग, ठीक है. चलिए नेक्स्ट वन, व्हाट डज द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन इमॉर्टल एज एंड इमॉर्टल यूथ सिंबलाइज, क्या कॉन्ट्रास्ट निकल रहा है, क्या कॉन्ट्रास्ट निकल रहा है. आपको अगर हिंट दूं तो इट इज इन आई थिंक इनकम्पैटिबिलिटी होगा, सो टी ए होगा, ठीक है, या इनकम्पैटिबिलिटी बिटवीन अ गॉड एंड अ ह्यूमन बीइंग. Very good, very good, very good, very good. It is the imbalance of power between mortal and a deity. Deity मतलब समझते हो ना, किसी भी देव या देवता को हम लोग deity बोलते हैं. Any god or goddess is regarded as a deity. ठीक है. Fifth one. Read the statement. Tithonus asks Aurora to take back thy gift. ध्यान से करना, इसमें बार बार आपका गलती हो जा रहा है. So अच्छे से करिए. Tithonus बोलता है अपना गिफ्ट ले लो, टेक बैक दाई गिफ्ट. ही रियलाइजेस दैट गॉड देमसेल्व्स कैन नॉट रिकॉल देयर गिफ्ट. ये क्या बता रहा है, ये क्या बता रहा है, यही तो आयरनी है ना कि टिथनस को पोएम के बिगिनिंग में समवेयर वो बीच में बोलता है दैट हियर मी, लो इफ यू कैन हियर मी टेक बैक योर गिफ्ट, टेक बैक दाई गिफ्ट. एंड देन बीच में कहीं वो डालता है दैट गॉड देमसेल्व्स कैन नॉट रिकॉल देयर गिफ्ट. वेरी गुड गाइस. सो बेसिकली यहां पे जो स्टेटमेंट 2 है वो कॉन्ट्रडिक्ट कर जा रहा है स्टेटमेंट 1 को, ठीक है. इट इज कॉन्ट्रास्टिंग विथ स्टेटमेंट 1. It is contrasting with the statement 1. Although he is asking Aurora to take back her gift, but then he recalls that God themselves cannot recall back their gifts or take back their gifts. What does the phrase goal of ordinance refer to in the context of poem? गोल ऑफ ऑर्डिनेंस का मतलब क्या है पोएटिक कॉन्टेक्स्ट में? That there are some laws of nature which are made and those natural orders of things are universal and it should not be surpassed. ठीक है, you should not make an attempt to surpass the natural order of things. B को लॉक किया जाए,
बी को लॉक कर दो, मंजोत त्रिपाठी बोल रहे हैं, तो आओ बी को लॉक कर दिया एंड ये मिला आपको 100 on 100 इन इंग्लिश। चलो मैं मैनिफेस्ट करता हूं कि आपको 100 में 100 आ जाए, ठीक है। नेचुरल बाउंड्री ऑफ डेथ दैट डिफाइंस द ह्यूमन एक्सपीरियंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन। Why does Tithonus refer to dead as happier in the final stanza? Those people who have completed their cyclical nature of life, they are happier. Very good, guys. Extremely proud of you because they have successfully completed their cycle of life and have found eternal rest, which Tithonus is incapable of attaining. ठीक है? चलिए next one. The silver star that guides Aurora serves as a reminder of the silver star, thy guide that shakes in those tremulous eyes, was the line. इटर्नल एसेंस डी को लॉक कर दूंगा तो भाई नंबर खराब आ जाएगा। ठीक से देखो, सी द क्वेश्चन प्रॉपरली। The silver star that guides Aurora serves as a reminder of the eternal, unchanging cycle of morning. It's a testament, it's an evidence of Aurora's eternal grace, beauty, and youth that mocks Tithonus's decay. ठीक है? Which no longer acknowledges Tithonus's decay, or which no longer makes Tithonus look majestic. Rather, it adds more to the gore of his plight, of his condition, of his deterioration. Chaliye, number 9. Which of the following best describes the shift in Tithonus's tone when he remembers his days far off? सोच समझ के बोलिए, सोच के देखिए टोन क्या हो रहा है। व्हाट इज द शिफ्ट इन द टोन? शिफ्ट का मतलब समझ रहे हैं आप? चेंज इन टिथेनस's टोन when he remembers in the days far off, I was so handsome, I was so lively, I was so majestic. And cut to present, today he feels all worn out, all famished, all exhausted, all shrunken, all dissolved, and every adjective that you can add on to. ठीक है? Crippled. So from very resignation, very is tired, out of his tired state, he resigns to his fate, and at the same time, his sensory, his memory is filled with nostalgia. Next one. What is the central philosophical message Tennyson explores through Tithonus? What is that philosophical message? I would say ambition comes with consequences. Tithonus was ambitious and therefore it left him to decay eternally, perpetually. So क्या होगा इसका? Trying to surpass the orders, the natural orders, can lead to loss of humanity itself. ठीक है? Not desire for power, beta. Power is incorrect. He did not want power. Rather, he wanted to
feel alike that of a god. He wanted Aurora to choose Tithonus as her beloved so that he could feel equal to God. So that was not a desire or a thirst for power. That was a desire which stemmed from ambition to become equivalent to God because a goddess has chosen me. Take care. Got the logic? Chal. Starting with your give reason. The speaker refers to the goal of ordinance as a place where all should pause. Pause का मतलब क्या होता है? Cease to exist. ठीक है? That means simple word में they should die after a due course of time. Very good, Priyank Singh. Because everyone have to die according to nature, but Tithonus couldn't. ठीक है? सो सबसे पहले मैंने तो टेक्सचुअल उठा लिया. ठीक है? इट इज द मोस्ट मीट फॉर ऑल. ये लाइन है बिकॉज इट इज द मोस्ट मीट फॉर ऑल वेयर by natural laws living beings should perish or they should cease to exist. Very good study budding. Very good, very good. Chaliye, second one. Tithonus changes over time from a godlike figure into a withered form because. Very good. He asked for irrevocable. Irrevocable का मतलब क्या होता है? Which cannot be taken back. ठीक है? Irrevocable is which cannot be taken back. Boon, that is वरदान of immortality without being granted immortal youth. ठीक है? चलिए third one. Tithonus no longer wishes to associate with the natural world of his immortal lover because he no longer wishes to reside by Aurora, immortal lover, because.
ठीक है. He feels alienated and incompatible in Aurora's radiant beauty while that of his ghostly nightmare. So Aurora is beautiful. Yes, beta, if you're getting 18 on 20, it is fine for the time being. You just have to push yourself a little more, and I think you'll end up getting 20 on 20. Take care. He feels lost, alienated, and extremely incompatible in Aurora's radiance and her glory and beauty, while he has been reduced down to that of a ghostly figure who is just like a nightmare. ठीक है? In the thresholds of the east. चले आगे बढ़े. Next one. Tithonus describes the light and shadows of goddess as cold despite their rosy and beautiful appearance because ठीक है, because they bring him, that is Aurora's beauty or warmth brings him no warmth and comfort, vitality, rather strips away his vitality and warmth, and he stands, and rather her glow, Aurora's glow stands as a reminder of the eternal pain he has been imprisoned into, he has been caged into, he has been locked into. ठीक है. Tithonus considers immortality a cruel gift because ठीक है, because the boon has turned into a cell, that is prison of eternal suffering owing to his depleting, that is deteriorating or deprecating plight, that is condition, his physical state. ठीक है, and with this we complete Tithonus as well. बजाओ ताली, चलो बजाओ ताली, ठोको लाइक्स. या चलो जल्दी से मैनिफेस्ट कर लो, आंख बंद करो, क्लोज योर आईज, जॉइन योर हैंड्स एंड मैनिफेस्ट दिस, मैनिफेस्ट दिस, मैनिफेस्ट दिस, आंख बंद करके. ऑन द डे ऑफ रिजल्ट ऑल इंडिया रैंक यहीं से आएगा. आंख बंद करो, याद करो वो दिन जब आपका नाम लिया जाएगा, आपके पेरेंट्स की आंखों में खुशी होगी. चलिए चलिए चलिए,
Let's move ahead. Going to the third poem, that is Beethoven, one of my favorite poems. Like, I deeply resonate with this particular piece of writing by Rain Koiza. Chaliye, what does the poet imply by saying all men want their boys to be geniuses in the context of Beethoven's father? हिंट अगर आपको दूं तो इसका हिंट है, ठीक है, वेयर इज वाटर. Amazing, amazing, amazing. क्या बात है. It stands as a criticism of how parents often use potential to justify emotional and physical abuse. You know, we want things to turn out for best for you, and that is why, you know, I'm being harsh. I'm going hard on you, not realizing it can mentally leave a person stained forever, perpetually. Take care. Next one. The repetition of the phrase not good enough throughout the poem serves to hint do. याद आ रहा है कुछ आपको? याद आ रहा है? His father's anthem was like a broken record which echoed not just during his childhood into his ears, but it continued till he grew into a very popular adult, okay? A very popular artist. So it is the lingering effect of the traumas, okay? Represents the psychological anthem of trauma that fueled Beethoven's relentless drive. Next one. Why does the poet describe Beethoven's fingers as the gnarled roots of the tree trunks? Gnarled का मतलब क्या होना है? जकड़ जाना, ठीक है? Entangled, that is gnarled. Because he kept playing the music, na? He kept playing the crescendos softly, slowly, loudly, as much as he could. But then nothing could please his father. So to illustrate the physical toll means labor. Rather, you can associate it with exhaustion. Okay? He got exhausted in an attempt to please his father, which cramped his fingers like the gnarled root. So option D is your correct option. What is the importance of Beethoven's amputating the legs of his piano? He amputated the legs of his piano. Keyword batao. This is your keyword. Bhakti. अपने काम के प्रति भक्ति. वो इतना ज्यादा डिवोटेड था कि वो अपने डेफिशिएंसी को ही ट्राइड टू डिफीट हिज डेफिशिएंसी. वाओ, प्लीज यूज दिस फ्रेज इन योर आंसर. कितना अच्छा फ्रेज दिया आपको. Beethoven tried to defeat his deficiency. What is the figurative speech that I've used over here? Alliteration. ठीक है. ए को लॉक कर दिया जाए, लोग बोलते हैं, और ये हो गए 7 करोड़ आपके. So it symbolizes his refusal to be defeated by his own deafness, seeking to feel the music through vibration. Please use this phrase in your answer. He made an attempt to defeat his own deficiency. ठीक है? Defeat his own deficiency of deafness. लो भाई, D. Defeat deficiency deafness.
चलिए नेक्स्ट वन, द description of music as an armada marching through the firing cannonballs. It's a very important metaphor on the part of Beethoven as a poem. What does it indicate? It seemed that each note of his music that he produced, it just exploded into the ears of the listener and the hearers who would hear his music. ठीक है? So it was like an invasive यानी जबरदस्ती घुसपैठ करना. अरिजीत का म्यूजिक, अरिजीत सिंह का म्यूजिक को कान में लगाओ, आप चाहो या ना चाहो आपके आंख से आंसू आ ही जाएंगे अगर आपका दिल टूटा हुआ होगा तो. ठीक है? So it was an invasive, powerful force that completely captures and overwhelms the human senses. चलिए, read the statement. ध्यान से इसको, हाँ ध्यान से पढ़ने का है. The musicians held their bows a quarter inch above the strings, making no sound. Statement 2 is Beethoven perceived the silence as perfect. Trick question. Choose wisely. अरे यार बहुत हड़बड़ी कर रहा है, आराम से पढ़ो बेटा. रिजल्ट के साथ साथ और भी थोड़ा सा एनालाइज करो. कंटेक्चुअली घुसो थोड़ा सा. इनका इंटेंशन क्या था? म्यूजिशियंस का इंटेंशन क्या था? टू मॉक और मेक फन ऑफ बीथोवन, राइट? ये था इनका इंटेंशन. बट ऑल्दो वो लोगों का अटेम्प्ट था मजाक उड़ाना, लेकिन बीथोवन परसीव द साइलेंस एज परफेक्ट. Why does he perceive it as perfect? Because he was lost to his own musical इंटेलेक्ट. वो अपने ही धुन में, जो वो मन ही मन में जो धुन बना रहा था, वो उसमें ही खोया हुआ था, जिसकी वजह से ही डिड नॉट इवन बॉदर कि सामने वाला बजा रहा है नहीं बजा रहा है. उसका म्यूजिकल जीनियस या इंटेलेक्ट ऐसा था कि इवन म्यूजिशियंस उस लेवल पे जाके सोच नहीं पाते थे. एंड that makes option C your correct one, where statement 1 is the mockery while statement 2 shows his ignorance. ठीक है? Why his ignorance? Because he was lost to his own musical intellect. Got the logic? यहां पे ठीक है, स्टेटमेंट 2 इलस्ट्रेट कर रहा है इंटीमेसी विद साइलेंस, बट 1 का इंटीमेसी विद साइलेंस को लेके कोई कनेक्शन नहीं है. सो बी रॉन्ग हो गया, रिजल्ट नहीं है. एंड स्टेटमेंट 2 इज द रीजन व्हाई म्यूजिशियंस चोज नॉट टू प्ले. नहीं होगा, क्योंकि बीथोवन के लिए साइलेंस परफेक्ट था. उसने कुछ ऐसा बताया नहीं था कि मेरे लिए साइलेंस परफेक्ट है. सो बोल के ये तीनों इनकरेक्ट हो गए. ठीक है? You all have to practice statement based question very well. अच्छे से इसको practice करके जाइएगा. That this particular MCQ could be your one, जो आपका 100 maker या 100 breaker बन सकता है. या तो 100 on 100 दे के चला जाएगा लिटरेचर में, नहीं तो फिर वो लेके चला जाएगा. So give yourself good amount of practice. चलो, what does the cosmic imagery, that is the solar system, are defined as the symbol stars are falling and crashing, communicate about Beethoven's musical genius, his intellect? What does it convey about Beethoven's intellect? Amazing, amazing, amazing. That is the scale, the measures, the extent of his emotional gravity and artistic expression, the way he expressed his musical knowledge. It could traverse to even solar systems, and it could make the stars and planets and comets collide. ठीक है? Although it's a hyperbole, exaggeration किया है, but बताने के लिए किया है कि उसका म्यूजिक कितना इंटेंस था, उसका कॉम्पोजिशन कितना इंटेंस था.
आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन और चाहिए, आ जाइए भाई, सैंपल पेपर परचेज कर लो। ट्रस्ट मी, सैंपल पेपर करके आपको मजा आ जाएगा। सैंपल पेपर के बाद आपको और कुछ नहीं करना है, आई कैन अश्योर यू। सैंपल पेपर मेरा 5 सैंपल पेपर के बाद आप आराम से निश्चिंत होकर बैठ सकते हो। अगर आपने एग्जाम लिखते लिखते गड़बड़ नहीं किया, अंडर प्रेशर अगर आपने गलत परफॉर्म नहीं किया, 100 इज योर्स। ठीक है, the man got down on his knees for no one, but he got down on his knees for his music. This contrast emphasizes, ये क्या बताता है? No, 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 no. Think. It was not his arrogance. No, he was not arrogant. Rather, he was devoted. He only got down on his knees for music. वो अपने धुन को, अपने गाना को भक्ति के तरह पूछता था। The way I worship, teaching in the same manner Beethoven worshipped his music, in spite of not having the most precious tools of his, that is his eardrums. ठीक है, so he was religious, but not towards king and aristocrats. Aristocrats यानी someone who comes from the hierarchy, ऊंची पदवी। ठीक है, एरिस्टोक्रेट्स के सामने अपना डिवोशन नहीं दिखाता था, रादर वो अपना म्यूजिक के सामने डिवोशन दिखाता था। नेक्स्ट वन, what is the poet's likely perspective on the relationship between madness and genius? क्या रिलेशनशिप निकल रहा है? रेन कॉइंजा क्या बताना चाह रहा है कि ईदर बीथोवन वाज मैड और ही वाज जीनियस, बट यू नो इट इज सेड ना कि जीनियस बनने के लिए भी पागलपन चाहिए होता है। अगर आपके अंदर जोश होगा, वो ड्राइव होगा, वो एनर्जी, वो जज्बा होगा, तो अपने आप तब के भी जीनियस बन जाओगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। True genius emerges from the struggle to navigate the distance between pain and creation. असली जीनियस लाइफ में वही बन पाते हैं, असली हीरा वही चमकता है जो सबसे ज्यादा आग में तपता है। तो इसीलिए जब लाइफ आपको बहुत ज्यादा कठिनाइयों वाले रास्ते से आगे लेके जाए, तो कभी निराश नहीं होना चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिंदगी आपसे कुछ मांगती है, जिंदगी आपको कहीं खड़ा हुआ देखना चाहती है, इसके लिए शायद आपको टेस्ट किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे, नेक्स्ट वन। Which of the following best completes the final thought of the poem? To know the man, all we had to do was listen. Amazing, amazing. In order to understand Beethoven's life journey and story, we did not have to read his biography or history. Rather, you just close your eyes and listen to his music. For example, मेरे को जल्दी से म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स पसंद नहीं आते हैं, एंड लास्ट ईयर मैंने अनुव जैन का कॉन्सर्ट फर्स्ट टाइम कैलकाटा में अटेंड किया, एंड दिस बॉय हैड सम सॉर्ट ऑफ करिश्मा एंड पर्सोना, जहां पे वो अपना हर एक गाना शुरू करने से पहले उस गाना के पीछे का बैक हिस्ट्री बताता है कि उसने वो क्यों लिखा है। सो जब मैंने लाइव कॉन्सर्ट अटेंड किया और उसका बैक हिस्ट्री को समझा, हर गाने के पीछे का रीजन, दैट व्हाट ड्रोव हिम टू राइट दैट सॉन्ग, I understood that at times, you don't even have to get into the historical context of a person's journey. All you just have to do
in order to understand, be it Beethoven, be it Arijit, be it Anup Jain, be it KK or anyone, is just close your eyes and listen. उनका म्यूजिक अपने आप वो बया कर देता है. ठीक है, चलिए, moving to the give reasons. The musician tried to mock Beethoven by mimicking his movement and remaining silent because no. Why musicians tried to mock Beethoven? Because they failed to understand Beethoven's musical intellect, to which they attempted to mock him out of frustration. ठीक है? To musicians, they thought that Beethoven was very demanding, although they themselves did not have that musical intellect which Beethoven's mind had. And Beethoven could process compositions and music with such a speed that these musicians, the band performers, they did not have that much of depth and gravity in them. And therefore, they mocked him out of their frustration, thinking that Beethoven is acting very demanding. ठीक है? चलिए, the poem suggests that it is not necessary to know Beethoven's history to truly understand him, because I'll give you a very good line for this. I'll give you a very good line for this. Please उसको अच्छे से लिख लीजिएगा जो मैं बोलूंगा. लिख लो इसको. I hope you all know what is the meaning of biography. Please use this in your answer. To understand Beethoven, his biography, that is his brief literature, उसका historical context या background was secondary. आपको पढ़ने का भी जरूरत नहीं है टू हिज सिम्फनी. यानी उसका म्यूजिकल नोट्स ही ऐसा था कि उसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट आपको जानने का दरकार ही नहीं है. उसके म्यूजिक में ही उसका पूरा दुख, दर्द, all his past traumatic experiences, everything is imbibed in his symphony. ठीक है? Very good, treasure of stories. I like your answer. His music itself is a reflection of his hard work. But please use this in your answer. ठीक है? His biography is secondary to his symphony. चले आगे बढ़े. Next one. The repetition of the phrase not good enough in different context emphasizes Beethoven's internal struggle because very good, Bizarre.
ठीक है. It became a haunting repetition which lingered. Lingered means which persisted. Yeah, which existed, which lingered or persisted on from his childhood to his adulthood. The trauma which remained persisted. ठीक है. Next, the line, he couldn't hear the audience's clapping, a very important part ISC के लिए. ठीक है. He could not hear the audience's clapping highlights Beethoven's isolation because beautiful line. Please make use of it in your answer. Even at the height of standing ovation. Height का मतलब समझते हो? Even at the pinnacle of his success, when he was at the peak, pinnacle means he was at the peak of his career, still he remained trapped. वो बंद था into a silent chamber, which kept him devoid of all the praises and love which were showered upon this poor fellow, Beethoven. ठीक है. चलिए, next one, last one. Beethoven is portrayed as an addiction in the poem. Why? Why Beethoven is portrayed as an addiction in the poem? ठीक है. His music was all consuming. One second. His music was all consuming. अच्छा, all consuming लिख दिया है. His music was all consuming, leaving indelible. What is the meaning of indelible? Which cannot be erased. ठीक है. Indelible impact into the ears of the listener or of the hearers. ठीक है. In other words, बीथावन के जो ऑडियंस होते थे वो लिटरली उनके ऊपर एक होल्ड, कमांड, इन्फ्लुएंस ले लेता था अपने म्यूजिक से. ठीक है.
इन्फ्लुएंस ले लेता था अपने म्यूजिक से, म्यूजिकल इंटेलेक्ट से। पोर्ट्रेट का मतलब होता है जो दर्शाता है बेटा। बीथावन इज पोर्ट्रेट, हिंदी में अगर मैं बोलूं इट इज दर्शाना, क्या दर्शाया जा रहा है। ठीक है, मेरी हिंदी भी उतनी अच्छी थी जितनी अच्छी मेरी इंग्लिश है स्कूल के टाइम पे। मुझे शुद्ध हिंदी बोलनी आती है, मैं ऐसे वचनों का प्रयोग कर सकता हूं कि आप उसका अनुवाद नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलो बजाओ ताली, हो गया बीथावन कंप्लीटेड। मूविंग टू द फोर्थ पोएम। ये हो गया हो गया हो गया, बीथावन इज डन। चलिए मूविंग टू द फोर्थ वन, फोर्थ पोएम पे चले। आ जाइए, कॉम्प्लेक्स पोएम। आपको डेफिनेटली इसका मेरा वाईटी लेक्चर जाके देखना चाहिए। दिस पोएम इज अगेन वन ऑफ माय फेवरेट्स and very personal to me. ठीक है, because I know what it feels to lose your close person, that's why, so I could resonate with Mamang Dai. Why does the poet say small towns always remind me of death? Why? Now death is very deeply felt. Why death is very deeply felt? Question raise karo. Small towns remind me of death. In other words, why is death deeply felt? क्यों डीपली फील किया जा रहा है? बिकॉज ऑफ द अनचेंजिंग और रूटीन्ड नेचर ऑफ स्मॉल टाउन्स, राइट? क्यों डीपली फील कर पा रहे लोग? क्यों लोग के पास समय है? बिकॉज दे आर इंटिमेटली टाइड एंड टाउन इज पोर्ट्रेड एज स्टैग्नेंट, as unchanging nature of the town, which mirrors the finality of death or makes the death appear very personal to individuals in small town. ठीक है, so option C. Next one, life and death, only the rituals are permanent. What does this line suggest about human existence? The people go, but it is their values, it is their lessons, it is their principles which they leave behind, and we hold on to them and we move on in life. ठीक है, very good guys, very good. It shows that individual lives are fleeting का मतलब हो गया short lived, but it is the custom that we create provide a sense of continuity. ठीक है, it is the old custom that we hold on to keep moving ahead in life. That is what it conveys. चलिए third one, the comparison of the river to a torrent of grief. Now what is the meaning of torrent of grief? It is the vast ebb and flow, the ups and downs of emotion as we undergo the journey of life. उसका मतलब होता है torrent of grief. तो ये क्या बता रहा है? ये प्राइमरीली क्या कन्वे कर रहा है? ओ थैंक यू सो मच प्रियांक, ये मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे से पढ़ रहे हैं। Very good, guys. So, torrent of grief is basically the emotional weight and deep flowing sorrow inherent in the natural world. So, just like your river, where there is different water current during different time,
In the same manner, our soul during the different phases and the journey of life, it undergoes different kind of emotions. अभी आपने 12th की स्टार्टिंग में बहुत मस्ती किया, आपका सोल बहुत इंजॉय किया, रिलिश किया, अभी आपके अंदर में बोलते हैं ना एंजाइटी, एप्रीहेंशन, सो देयर इज अ टॉरेंट ऑफ ग्रीफ, क्या होगा, अच्छा जाएगा, नहीं जाएगा. सो दैट इज a constant change and the frickle in the emotions that is portrayed through the torrent of grief. ठीक है, चलिए, what is meant by the immortality of water in the poem? हमेशा याद रखिएगा that water को symbolize किया गया है by soul, and soul is something which is permanent. शरीर का अंत तय है, आत्मा नश्वर है. नश्वर होने का मतलब क्या होता है? जिसका विनाश ना किया जा सके. ठीक है, पक्का लगा दिया जाए बी में ताला, जल्दी बोलिए. वेरी गुड, वेरी गुड. The cyclical nature of water, rain, earth, mist, they all represent eternal life, eternality of soul. ठीक है, आत्मा का कभी भी अंत नहीं हो सकता है. चलिए, स्टेटमेंट ध्यान से, डिस्क्लेमर, यहीं आप लोग बार बार फंस जा रहे हैं. ठीक है, बी कॉशियस, ध्यान से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो. द डेड आर प्लेस्ड पॉइंटिंग वेस्ट, द सोल विल वॉक इनटू द गोल्डन ईस्ट इनटू द हाउस ऑफ सन. हाउ आर द टू स्टेटमेंट रिलेटेड? वेरी गुड गाइज, अरे तेरी क्या बात है, शाबाश, बाउ डाउन, सीख गए आप लोग, आ गया आप लोगों को समझ में. अमेजिंग, अमेजिंग. सो डेड आर इंडीड प्लेस पॉइंटिंग द वेस्ट, ताकि इसका आउटकम, इसका रिजल्ट क्या निकले कि नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन द सोल विल राइज, it will go into the luminous and radiant golden east and it will walk with God, right? So the soul will walk into the golden east, into the house of sun. In other words, it will get salvation, moksha ki prapti ho. So 2 is a reason for statement 1. ठीक है, 2 is the reason for statement 1. हाँ, सॉरी गाइस, चलो, ऑडिबल ना, सुनाई दे रहा है ना? चलिए चलिए चलिए. What does the shrine of happy pictures symbolize in the poem? Whenever we associate our happiness, the first picture that strikes into our mind is the days of childhood, carefree days of childhood. ठीक है, so it is basically the preservation, an attempt to preserve our childhood innocence. There is always an inner child within us, and whenever we associate anything with happiness, या कभी भी बचपन का अगर फोटो भी दिख जाए तो अपने आप ही चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है, एंड यू स्टार्ट रेट्रोस्पेक्टिंग एंड रिफ्लेक्टिंग कि यार वही दिन अच्छे थे. भाई आज जब मैं किसी छोटे बच्चे को देखता हूं तो मुझे बहुत जलन फील होती है, मुझे बहुत ईर्ष्या होती है उससे, उस बच्चों को देख के, क्योंकि वो लोग जितना खुल के हंस पाते हैं, हम लोग शायद बड़े इंसान, बड़े लोग उतना खुल के हंस ही नहीं पाते हैं. बहुत जल्दी थी हमें बड़ा होने की, लेकिन यू नो विथ मैच्योरिटी
with wisdom it takes away your innocence, it strips you of your innocence. ठीक है? So happiness or happy days are always associated with childhood. Next one. The phrase small towns grow with anxiety implies the small towns grow with anxiety implies very good guys, very good. It implies urbanization and the unknown future that brings a sense of dread. Dread का मतलब क्या होता है? Which brings a sense of fear and discomfort. ठीक है? It brings a sense of fear and discomfort to traditional settings. Very good cinematic shot if you've done this first. What does the river holding its breath to seek a land of fish and stars? लैंड ऑफ फिश एंड स्टार्स का मतलब होता है एक ऐसा दुनिया विच इज फ्री फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ इमोशनल केओस एंड सफरिंग. सो इस टाइप का रिवर का यानी सोल का इस टाइप का जगह खोजने का मंतव्य इंटेंशन क्या है? Very good. It is a longing for pristine. Pristine means perfect, spiritual realm, dimension beyond the grief of physical world. यानी बोलते हैं ना, आत्मा को असली शांति सिर्फ परमात्मा के साथ मिलके ही मिलती है. दैट इज द पर्पस ऑफ एनी सोल्स लाइफ जर्नी. ठीक है? आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन. Next one. Number 9. In the cool bamboo restored in sunlight, life matters like this. This indicates a shift in tone toward. The poem opens on a very pessimistic note and it concludes on a hopeful and a positive and an optimistic note. So, tone कैसे shift हो रहा है? Very good. It indicates a peaceful acceptance and realization of the values of the present moment. So it is like, irrespective of all the anxiety or whatsoever that is accompanied with old age, but in spite of all that, life in a small town matters. Life in a small town is revered, is respected, and life in a small town is something which is precious to the occupants. Okay? So it matters like this. So it conveys a peaceful acceptance. Number 10. What is the deeper understanding required to grasp the poem's conclusion? We all want to walk with gods. के रॉय, अगर आपको दूसरा किसी का क्लास करना है तो आप फिर इस बाद में देख लेना, इसका रिकॉर्डिंग भी तो रहेगा ना, सो यू कैन वॉच इट लेटर एज पर योर ओन कन्वीनियंस एंड कंफर्ट. ठीक है? चलिए, what is the deeper understanding required to grasp the poem's conclusion? We all want to walk with gods. Very good, very good. Recognizing that the human desire to transcend mortality and find a place in eternal arms of the nature, going and uniting with the Almighty, going into the spiritual embrace of the nature, becoming one with God. That is what the final closure and conclusion of this poem stands as. ठीक है? Very good. Chaliye, moving towards give reasons. The howling wind down the gorge
symbolizes unpredictability of life. Just give me a second. हाँ, चले बताए। Because death strikes suddenly, because death strikes suddenly, leaving life on unpredictability, leaving life on unpredictability, representing uncontrollable forces of nature या डेस्टिनी। डेस्टिनी या नेचर कुछ ऐसा है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। डेथ हमेशा बिना किसी वार्निंग के आके स्ट्राइक करता है, सो डेथ स्ट्राइक सडनली लीविंग लाइफ ऑन अनप्रिडिक्टेबिलिटी, रिप्रेजेंटिंग अनकंट्रोलेबल फोर्सेस ऑफ नेचर और डेस्टिनी। चलिए सेकंड वन, द होम टाउन इज डिस्क्राइब्ड एज लाइंग कामली अमिड्स द ट्री इन द पोएम बिकॉज। हाँ हाँ, क्रिश करा देंगे, बोर्ड का पेपर भी सॉल्व कराएंगे, डोंट वरी, ठीक है, पीवाई क्यूज भी उठाएंगे। व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग काम? I would say regularity, हाँ, regularity of death, ठीक है। That word calm has a symbolic purpose in the poem because this calm suggests, emphasizes how the occupants, the people of the small town, they have become accustomed. Accustomed का मतलब क्या होता है? They have become, accustomed means they have become used to. ठीक है, they have become used to. So if you recall, there was a particular line, life and death, only the rituals are permanent. Just the other day someone died, just the other day someone died, that is how Mamang died, she says. So people have become used to, ठीक है। चलिए fourth one, the desire to walk with gods in small town by the river signifies a longing for immortality.
वो थर्ड वन स्किप हो गया क्या? सॉरी, माय बैड. The river is personified as knowing the immortality of water because, right? And then क्या होगा? So water symbolizes soul, comma, possesses an eternal continuity. Soul or the water knows that its cycle is eternal, which the body lacks. ठीक है? Which the body lacks. Fourth one, the desire to walk with God in small town by the river signifies a longing, yearning, or same thing as desire for immortality. Because what kind of immortality is it indicating to? What kind of mortality is it indicating onto? To find eternal peace through walking with gods in this vast universe. ठीक है? The desire to walk with God in small town by the river signifies a longing for immortality, because every soul wants to find that eternal peace, that ultimate peace through walking with God in this vast universe. Yes, peace beyond mortality. Amazing, doper, factly. Loved your answer. Do perfectly. Nice one. Chaliye, fifth one. The immortality of water is a central idea in the poem because, very good. Very good. ठीक है? River remains free spirited and never dies, just like the eternal soul. ठीक है? Just like the permanent soul. चलो बजाओ ताली. हो गया खत्म आपका स्मॉल टाउन्स एंड रिवर. बस अब डेथ बी नॉट प्राउड बचा.
जस्ट 1 सेकेंड, चले आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए लास्ट पोएम, डेथ बी नॉट प्राउड, जल्दी जल्दी करते हैं, फिर मुझे आपको कुछ बताना है डायरेक्टेड राइटिंग को लेके, एंड देन हम लोग टाटा बाय बाय करेंगे और कल मैकबेथ के लिए मिलेंगे। व्हाई डज द स्पीकर एड्रेस डेथ एज पुअर? Death is addressed as poor. What is the main idea? बेटा परसों से इंग्लिश लैंग्वेज की लाइव शुरू हो जाएंगी, ठीक है? डे 1 आई मीन लैंग्वेज के लिए फर्स्ट वील स्टार्ट ऑफ विद कॉम्प्रीहेंशन एंड देन आपको सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, डोंट वरी। अभी यहां फोकस करो। डेथ, द स्पीकर एड्रेसेस डेथ एज पुअर। व्हाई? व्हाट इज द आइडिया? To debunk, to criticize, to mock, to look down upon, to belittle, to defame death, right? So to mock death's perceived power and show that it is actually pitiable and weak. ठीक है? What is the picture that Donne refers to when he mentions rest and sleep? What is the picture that John Donne refers to when he mentions rest and sleep? Very good, guys. Very good. वो क्या बोलता है? Death is just an imitation, right? Death is just an imitation. वो भी कैसा imitation? अगर आपने मेरा explanation सुना होगा तो मैंने ये word यूज किया है that death is a prolonged imitation, copy paste of rest and sleep. So the idea that death is prolonged version of sleep which is incapable of harming the poet. ठीक है? Next one. In what way is death a slave to fate, chance, king and desperate men? मैंने एक बहुत अच्छा फ्रेज यूज किया था, अगर आपको याद हो इसके लिए, डेथ इज अ स्लेव टू फेट, चांस, किंग एंड डेस्परेट मैन, कन्वेज दैट डेथ इज नॉट एन independent master but a dependent slave, right? Death is not an independent master but a dependent slave. क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। Death lacks its individuality and it only arrives when summoned का मतलब हुआ when called upon, जब बुलाया जाए या जब इन्वोक किया जाए डेथ को, ठीक है? External circumstances or human action. चलिए fourth one. What does the speaker imply by saying poppy or charms can make us sleep as well and better than the stroke? Stroke comes from the word strike, which is hit. So basically our brain gets hit by death or sleep. बोलते हैं ना, we are almost in a state of death when we are sleeping. Very good. क्या बोलना चाह रहा है? डेथ और कुछ नहीं है, डेथ इज जस्ट अ प्रोलॉन्ग रेप्लिकेशन, इम्यूलेशन of simple sedatives, of all those external things which can be used, external substances that can be used to make us sleep, be it hypnosis or be it any purgative drug sort of a thing. ठीक है? Purgative का मतलब होता है जिससे बहुत गहरी नींद आ जाए, ठीक है? Next one. Statement 1. Death is associated with poison, war and sickness. Statement 2. Mighty and dreadful force that should be feared. ध्यान से कर रे बाबा बाबा, ध्यान से कर. Be cautious. Statement based है.
एक तरफ बात हो रहा है कि डेथ पॉइजन वॉर सिकनेस के साथ जुड़ा है, जो कि अलग चीज है, और एक तरफ बोल रहा है डेथ माइटी और ड्रेडफुल है। तो मतलब ये एकदम फर्स्ट स्टैंजा का हो गया, एंड देन डेथ के कंपेनियंस के बारे में बात किया जा रहा है। आपसी तालमेल तो कुछ नहीं बैठ रहा है। वेरी गुड, अरे क्या बात है। नमस्कारम आप सभी को, बाउ डाउन, हैट्स ऑफ, बाउ डाउन, बाउ डाउन। सी इज योर करेक्ट वन। 1 and 2 आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। ये ले लीजिए आपका गिफ्ट, ये आने वाला है ऑन द वे, ठीक है, ऑन द वे। चलिए चले आगे बढ़े। What is meant by the phrase soul's delivery in the context of the poem? So it is like when death approaches, it hits, we die, and then our soul starts a, क्या शुरू करता है soul? Very good, guys, very good. It is the liberation of birth or soul into afterlife, ending its confinement or the state of being trapped in the body. ठीक है, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। चलिए, द क्वेश्चन वाई स्वेलेस्ट दाउ देन, तुम क्यों फूले नहीं समा रहे हो? जॉन डन इज ट्राइंग टू चैलेंज डेथ ओवर हियर, चैलेंज डेथ, वाई? I hope you all know what is the meaning of hubris is pride, ego, disdain, ठीक है, disdain, all these words are negative, ये सारे नेगेटिव एडजेक्टिव्स है, ठीक है। वेन भी आप बोल सकते हो, वेन का मतलब भी प्राइड होता है। सो सी इज योर करेक्ट वन। ह्यूब्रिस इज प्राइड, अनजस्टिफाइड प्राइड इन इट्स ओन इंपॉर्टेंस। डेथ क्यों इतना सेल्फ सेंटर्ड है? व्हाई इज डेथ सो सेल्फ सेंटर्ड? व्हेन a very important paradox is presented by the end of the poem, that one short past sleep and we wake eternally, death thou shalt die. So एक छोटा सा फेज को पार करके अगर डेथ खुद ही मर जाएगा, डिफीट हो जाएगा एट इट्स ओन हैंड, एट इट्स ओन अराइवल, तो उसे किस बात का इतना घमंड है? ठीक है। What is the short sleep mentioned in the final couplet, the ending lines of the poem? Very good. Short sleep is basically a brief pause. हमारे हिंदू धर्म में हम लोग बोलते हैं ना तेरहवीं, तेरहवीं, which means 13th, not 13 but 13 days तक माना जाता है गरुड़ पुराण के हिसाब से कि 13 दिन तक आत्मा घर के अंदर ही रहती है। सो बेसिकली वही है आपका शॉर्ट स्लीप, एक छोटा सा ब्रीफ पॉज टिल सोल्स गेट रेडी फॉर इट्स स्पिरिचुअल जर्नी, ठीक है। सो इट्स अ पीरियड बिटवीन फिजिकल डेथ एंड द इटर्नल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। Number 9. Which of the following best describes the tone of speaker throughout the poem? Throughout, tone, कैसा टोन है? कैसा टोन है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कॉन्फ्रंटेशनल है, डिफाइंट है, डिफाइंट मतलब वायोलेटिंग है,
एंड इंटेलेक्चुअली सुपीरियर है, ठीक है, क्योंकि वो क्रिश्चियन बिलीफ रिसरेक्शन दैट इज आफ्टर लाइफ के साथ अलाइन कर दे रहा है. सो ही स्पिरिचुअली अवेयर. द सिनेमैटिक, वेरी गुड, हियर्स योर शाउट आउट, ठीक है, गुड जॉब. 100 में 100 नहीं लाएगा तो कुटाई. चलो, what is the central paradox, the core central is the core paradox presented in the final line, death thou shalt die, तुम्हें मर जाना चाहिए. Once death approaches, we undergo a short, brief sleep, and then death will cease to exist. So, death, you should die. Very good. Once the journey to eternal life begins, the concept of death becomes obsolete. It becomes redundant, or it will not exist altogether. ठीक है? So, it is option C. एंड बिफोर वी प्रोसीड 1 सेकेंड, मैं आपको बता दूं, ये आप गड़बड़ मत करके आइएगा. डेथ दाउ शैल डाई इज अ पैराडॉक्स, लास्ट लाइन इज अ पैराडॉक्स, ठीक है, बट स्टार्टिंग का जो लाइन है, स्टार्टिंग का जो लाइन है या पोएम का जो टाइटल है, डेथ बी नॉट प्राउड, द फिगरेटिव स्पीच ओवर हियर इज apostrophe, ठीक है. What is the meaning of apostrophe? Apostrophe का मतलब होता है जब आप कोई inanimate, जैसे डेथ क्या है, डेथ इज नॉट अ लिविंग एंटिटी, वो एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, उसको कन्फ्रंट किया जा रहा है पर्सोनिफाई करके ह्यूमन तरीके से, जिसको हम लोग कंसिएट बोलते हैं, कन्फ्रंट करना बोलते हैं, बोल के उसको अपोस्ट्रोफी बोला जाता है, ठीक है. चलिए फटाफट से कंप्लीट किया जाए गिव रीजंस को. Dunn states that death is a slave to fate, chance, king, and desperate men because एक तो आप ये बोल सकते हो डेथ इज नॉट एन इंडिपेंडेंट मास्टर बट अ डिपेंडेंट स्लेव. एट द सेम टाइम आप क्या बोल सकते हो, नॉट अ, क्या लिखूं मैं, नॉट अ सॉवरेन. सॉवरेन पढ़ा होगा ना आपने हिस्ट्री में, किसी मोनार्क को हम लोग सॉवरेन बोलते हैं. सो नॉट अ सॉवरेन रूलर बट अ लोली सबऑर्डिनेट. कॉमर्स में आपने पढ़ा होगा सबऑर्डिनेट क्या होता है, जो लोअर पोजीशन या लोअर रैंक पे होता है, ठीक है. सो आप बोल सकते हो दैट डेथ इज नॉट अ सॉवरेन रूलर बट अ लोली सबऑर्डिनेट टू चांस, फेट, किंग एंड डेस्परेट मेन. चलिए नेक्स्ट वन. डन personifies death as poor death in the poem because why adjective poor has been used along with death.
Why is death being pitied by John Donne? ठीक है, टू स्ट्रिप डेथ ऑफ, स्ट्रिप का मतलब क्या होता है, हटा देना, टू रिमूव डेथ फ्रॉम इट्स मैग्नानिमिक. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नानिमिक? मैग्नानिमिक इज समथिंग दैट इज वेरी हाईली. किसी को बहुत ऊंचा पदवी अगर देते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि इट इज वेरी मैग्नानिमिक. ठीक है, सो टू टेक अवे, ठीक है, टू टेक अवे दैट इज टू स्ट्रिप. स्ट्रिप का मतलब हो गया टू टेक अवे, ले लेना, डेथ ऑफ इट्स मैग्नानिमिक पोजिशन और फ्रेम. जो डेथ से डरने वाला फ्रेम है ना, सम पीपल हैव कॉल्ड द माइटी एंड ड्रेडफुल, उसको हटा देने का. कॉम्पोजिशन पे भी जल्दी से वीडियो आएगा बेटा. ठीक है, चलो ठीक है. बिकॉज के बाद टू नहीं आएगा तो यहां लगा दो ही वॉन्ट्स. अब हो गया. Donne personifies death as poor in the poem because he wants to strip death of its magnanimous position. खुश? Flavian, happy? Get into the keywords बेटा अभी. वो आगे पीछे का वर्ड आप खुद से भी जोड़ लेगा. चलो नेक्स्ट वन. The speaker claims that charms and opium can produce effects similar to death because poppy and charms too can induce means give rise to peaceful sleep and that too better one than death. ठीक है, वेरी गुड इशिका, वेरी गुड. लीना, लीनत अहमद, good one. Chalo, next one. Death is associated with poison, war and sickness in the poem because ठीक है, these are some. Keyword is foul, keyword is foul and unpleasant dwellings. dwelling समझते हो ना क्या होता है? abode, space to reside, that is dwelling.
Where do you dwell? What is your abode? So these are some foul and unpleasant dwellings death is forced to reside with. That is why it has been said that death resides with poison, war, and sickness. And please remember that poison is symbolic of slow death, war is symbolic of violent death, and sickness is symbolic of क्या था? स्लो डेथ, वायलेंट डेथ एंड सिकनेस इज पेनफुल डेथ. करेक्ट, पेनफुल डेथ. सिकनेस से पेन होता है. ठीक है. These three are symbolic of slow, violent, and painful death. चलिए, last one. The speaker's overall attitude towards death can be described as defiant because वो क्या करता है? एकदम about the poet section से उठाइए कीवर्ड को. He debunks and undermines the stature, power and position of death. ठीक है. Stature means position, स्पेशली हाई रैंक के लिए हम लोग स्टेचर यूज करते हैं. ठीक है. स्टेचर ऑफ डेथ, stripping death of its perceived glory. Very good, Yanjana Datta. Very good. And with this, we complete our entire Rhapsody. Done. 2 घंटा मेहनत, बेहतरीन क्वेश्चंस, डन. ठीक है. चलिए, बस 2 मिनट और लूंगा मैं आपका, इससे पहले आप जाए. मेरे को बहुत ज्यादा कमेंट आया था अबाउट डायरेक्टेड राइटिंग, तो मैं आपको कुछ बातें क्लियर कर देना चाहता हूं. ठीक है. आई वॉन्ट टू क्लियर सम एयर ऑफ कंफ्यूजन विच इज गोइंग ऑन एसोसिएटेड विद डायरेक्टेड राइटिंग. सबसे पहला सवाल जो बार बार लोग पूछ रहा था, क्या फिल्म रिव्यू हमारे सिलेबस में है? द आंसर इज अ बिग नो. फिल्म रिव्यू हट चुका है. फिल्म रिव्यू इज गॉन. So please do not spread any incredible information without any authenticity कि फिल्म रिव्यू है हमारे स्कूल में तो टीचर्स ने करा दिया, ऐसा हो गया वैसा हो गया. प्लीज बंद करिए. आपके स्कूल में अगर आपके टीचर्स ने कराया है तो वो उनका प्रॉब्लम है. पता नहीं वो लोग क्या कर रहे हैं. आई डोंट नो. व्हेन द काउंसिल हैज क्लियरली स्पेसिफाइड व्हाट इज द सिलेबस फॉर 11th एंड 12th, क्यों उसको नहीं फॉलो किया जा रहा है स्कूल्स में, मुझे समझ नहीं आ रहा है. ठीक है. सो आपका पहला जवाब फिल्म रिव्यू नहीं है, तो आपको प्रिपेयर भी नहीं करना है. एंड आप लोग लास्ट बैच है स्पीच राइटिंग के साथ. दोज पीपल हु वुड बी वाचिंग दिस वीडियो, अगर कोई 11 का बच्चा हुआ यहाँ पे, तो स्पीच राइटिंग नेक्स्ट ईयर चला जाएगा, उसकी जगह ब्लॉग राइटिंग आ जाएगा. ठीक है. सो उसके बारे में नेक्स्ट ईयर बात करेंगे जब नेक्स्ट 12 होगा. इसके अलावा दूसरा कंफ्यूजन है डायरेक्टेड राइटिंग को लेके एसोसिएटेड विथ फॉर्मेट. फॉर एग्जाम्पल, बुक रिव्यू में हमारे टीचर ने कहा है कि आप बुक का नाम लिखिए, सपोजिटली हैरी
पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ एस्केबान लिखिए। यहां पे उन्होंने कहा है पेजेस, प्राइस, पब्लिक, पब्लिशर, ये सब कुछ नहीं देना है अब, और नथिंग इज रिक्वायर्ड, नथिंग इज रिक्वायर्ड। आपको अगर फॉर्मेट जानना है, आप CISCE.org के वेबसाइट पे चल जाइए। उसके बाद वहां एक एग्जामिनेशन बोल के एक पॉपअप होगा, वहां पे आप ISC बोल के एक सेगमेंट है उस पे टैप करिए, एंड वहां पे एक और सेगमेंट आपको मिलेगा, अनपैकिंग डायरेक्टेड राइटिंग। उसको आंख खोल के अच्छे से देखो एंड अपने स्कूल टीचर्स को भी भेजो। Send it to your school teachers. I don't know what is wrong with teachers of school. Are they daydreaming or what? Council has very clearly specified what format is to be accepted. Still, I see there are some teachers in different schools, they are creating hell lot of confusion among students, and that too at the last moment. Please do not get confused by what your school teachers are saying. ठीक है, उनको जितना नंबर काटना था आपका उन्होंने काट लिया प्री बोर्ड्स तक। बोर्ड्स में अब कोई दूसरा टीचर आपका पेपर को इवैल्यूएट करेगा, एंड दे हैव टू स्ट्रिक्टली अबाइड बाय द काउंसिल्स मार्किंग स्कीम एंड स्पेसिफिकेशन व्हिच हैज बीन प्रोवाइडेड इन द वेबसाइट इटसेल्फ। मैं आपको बता भी दे रहा हूं कि कैसे आपको निकालना है, कहां से आपको सही राइट फॉर्मेट मिलेगा। आइए मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। Here you go to CISCE.org, ठीक है। इसके बाद you go to examination over here. इसके बाद you go to, 1 second, you go to examination, you tap, अरे यार चलो कोई बात नहीं, नीचे चलते हैं। You tap onto ISC Class 12, ठीक है। ISC Class 12 पे आपने टैप किया, यहां ये जो पूरा आपको सेक्शन दिख रहा है इस पे देखिए, ये जो लास्ट वाला है, दिस वन, अनपैकिंग डायरेक्टेड राइटिंग, अ रिसोर्स फॉर टीचर्स एंड लर्नर्स। देखिए लिखा हुआ है टीचर्स एंड लर्नर्स, मतलब टीचर्स को भी सीखना जरूरी है। टीचर्स कैन नॉट बी सेल्फ सेंटर्ड इन दैट टोरा एंड ओरा कि भाई मुझे सब आता है, ऐसा नहीं होता है। वी एज टीचर्स आर एवरी डे लर्निंग समथिंग और द एल्स, एंड वी कैन नॉट ट्राई टू सुपरसीड काउंसिल का वर्ड्स। काउंसिल ने अगर कुछ दिया है तो उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, ठीक है। ये है आपका अनपैकिंग डायरेक्टेड राइटिंग फॉर्मेट। आंख खोल के देख लो क्या क्या है आपके लिए, मैं दिखा भी दे रहा हूं, ठीक है। आपके लिए यहां पे दिया गया है, इसको ठीक से देखो, इसको आंख खोल के देखो। 1 सेकेंड, लेट इट गेट क्लियर थोड़ा सा। द पीस ऑफ डायरेक्टेड राइटिंग मस्ट बी बेस्ड ऑन 2026 में देखो, आर्टिकल, book review, speech, newspaper, statement. There is no mention of film review. There is no mention of film review. So do not create confusion. कोई फिल्म रिव्यू नहीं है, सो ना कंफ्यूज होइए ना कंफ्यूज करिए। स्पीच राइटिंग जो इस साल आपका आने का चांस है वो नेक्स्ट ईयर हट के रिप्लेस हो गया है ब्लॉग से। देयर इज नो स्पीच राइटिंग फॉर नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर आर्टिकल है, बुक रिव्यू है, ब्लॉग राइटिंग नया इंट्रोड्यूस हुआ है, न्यूज़पेपर रिपोर्ट है एंड एसओपी है, ठीक है। सो डू नॉट क्रिएट एनी कंफ्यूजन। आई होप दैट इज क्लियर। चलो आंख खोल के अच्छे से देख लो फॉर्मेट को, look at the format properly, and by the way, here are your bifurcation of marks. 1 mark is reserved for format, 2 marks is for expression, and content carries 12 marks. So it is content plus format plus expression लेके आपका 15 मार्क का बन जाता है, ठीक है। इसके अलावा अच्छे से देख लो आर्टिकल में क्या है। आर्टिकल में आपको सेंट्रल अलाइनमेंट में टाइटल लिखना है, एंड देन राइट हैंड साइड ऑफ द पेज का स्टूडेंट रिपोर्टर लिखना है,
ठीक है, कोई नाम वाम कुछ नहीं आएगा, अच्छे से देख लो। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था बुक रिव्यू को लेके, लो भाई बुक रिव्यू भी देख लो। पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे बाय ऑस्कर वाइल्ड, एक्स वाई जी, या तो आप एक्स वाई जी लिखो राइट हैंड साइड में, और यू कैन राइट योर ओन नेम, दैट टू इज एक्सेप्टेबल, चलेगा। यू डोंट हैव टू मेंशन पेजेस, यू डोंट हैव टू मेंशन प्राइस जो आप करते थे यहाँ पे, यू डोंट हैव टू मेंशन पब्लिशर etc., जो भी था, whatsoever it was, this has been removed. So please send it to your teachers and tell them to strictly abide by council's format and do not to spread any incredible rumors and information. ठीक है, अंड शंड अफवाहें फैलाना थोड़ा बंद करें, आप भी और आपके स्कूल के टीचर्स भी। Got it? So with this, thank you so much. Thank you. Goodbye. Love you guys. We'll see you all tomorrow. कल 3 बजे इसी टाइम पे मिलेंगे मैकबेथ करते हुए। मैकबेथ की क्लास कल थोड़ी सी लंबी जाएगी क्योंकि ऑब्वियसली वी हैव टू कवर अप 6 scenes from Act 3, 3 from Act 4 and 8 scenes from Act 5, although they are very small, बहुत छोटे छोटे हैं, but फिर भी ठीक है। So till then, keep smiling, keep studying. I hope you all enjoyed today's session. Share this live video with your friends and let everyone benefit. I'll see you tomorrow. Keep studying, keep smiling. Take care. Bye bye. Take care.